For the protection and conservation of wildlife, certain animals need specific areas for breeding grounds. उन एनिमल्स को कुछ जो ख़ास जगहें प्रोवाइड की जाती हैं उन जगहों को प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं. By definition, a protected area is a clearly defined geographical space, recognized, dedicated, and managed through legal or other effective means to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem, services, and cultural values. Yani everything included in it. It is not only the wild animals that are protected there, it is the associated habitat, it is the associated cultural values जो अगर उसके साथ हैं, it is the associated every part, every aspect which is related directly or indirectly to the wild animals. Protected areas are one of the most effective tools for conserving species and natural habitat. IUCN ने जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, it classifies protected area according to their management plans. Various categories develop की गई हैं कि कैसे कैसे इन protected areas को divide किया जा सकता है, कौन कौन से areas हैं जो strict हैं, कौन कौन से areas हैं जिनमें human की intervention allow की जा सकती है. So accordingly ये जो कैटेगरीज हैं इनको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स में भी रिकग्नाइज किया जाता है. इंटरनेशनल फोरम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है वो यूनाइटेड नेशन का है, इन्होंने भी इसको रिकग्नाइज किया है. दे आर कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग एंड प्रोटेक्टेड एरियाज. सिमिलरली इंक्रीजिंगली बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस. जितने भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंसेस डेवलप होते हैं उनमें इन प्रोटेक्टेड एरियाज की जो कैटेगरीज IUCN ने डिक्लेयर की हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, बिकॉज दीज कैटेगरीज एक्चुअली दे क्लियरली डिफरेंशिएट वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज. These categories are the category 1, which is further divided into two categories, category 1A and category 1B. 1A is a strict nature reserve while 1B is a wilderness area. Category B, it includes the national parks. Category 3, that includes the natural monuments or their features. Category 4, it is for the habitat species management area. Category 5 is the protected landscape or seascapes, and category 6 is the protected area with sustainable use of natural resources. So again, we can even view that not only wild animals are protected or conserved, their associated habitats, their associated values, they are also being protected and conserved. According to IUCN, protected areas are classified into 6 categories. The very first category is called as strict nature reserve. It is the protected area that are strictly set aside to protect biodiversity, where human visitation, use, and impacts are strictly controlled to ensure protection of conservation values. The primary objectives of this strict nature reserve is to conserve regional, national, global outstanding ecosystems, species, occurrence or aggregations, and even the geodiversity features. Other objectives are to preserve ecosystems, to secure examples of natural environment for scientific values, to minimize disturbance through careful planning, to conserve cultural and spiritual values associated with nature. The distinguishing features of this strict nature reserve is these areas should generally have a largely complete set of expected native species, be capable of being managed to ensure minimal human disturbance, be free of significant direct intervention by modern human, have a full set of expected value of native ecosystems largely intact
with ecological processes. Be capable of being restored with minimum management intervention. Be managed for largely low visitation by humans. In short, we can say that this strict nature reserve is totally an area जहाँ पर humans को allow नहीं किया जाता कि वो intervene करें. अगर उसके साथ कोई भी cultural, अगर उसके साथ कोई भी spiritual attachment है किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर बहुत कम human intervention allow की जाती है. So इन areas में सिर्फ और सिर्फ scientific purposes के लिए शायद human को just for a very shorter period of time allow किया जाता है. These strict nature reserves, they have a very specific role in landscapes and seascapes. They protect some of the earth richness that will not survive outside. सिर्फ वो एरिया आपको वहीं एग्जिस्ट करता नजर आएगा और वो कहीं नहीं पाया जाता. Protecting additional ecosystem services. Providing area where ecosystem can be studied in a pristine and environment as possible. जहाँ पर ecosystem अपनी बिल्कुल नेचुरल हालत में एग्जिस्ट करता है और जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं परफॉर्म करवाई जा रही, ये एरियाज एक्चुअली वो एरियाज होते हैं. प्रोटेक्टिंग नेचुरल साइट्स दैट आर आल्सो ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंसेस. अगर से किसी स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व में कोई टेम्पल एग्जिस्ट कर रहा है या कोई मॉस्क एग्जिस्ट कर रही है, तब आप वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ी बहुत अलाउ कर सकते हैं, वो भी फॉर विद स्पेसिफिक परमिशंस. Issues for consideration. There are few areas not under some kind of legal or at least traditional ownership, so that finding places that exclude human activity is often problematic. जिस तरह अभी हमने बात की that if there is some religious attachment or religious component present in that particular area, तो obviously वहाँ पर human intervention एक problem बन सकता है. Most apparent problem is with climate and air pollution, because pollution is an ever growing phenomena and it's an ever growing problem जो humans की वजह से आ रही है. So उस चीज़ को अगर हम किसी तरह कंट्रोल कर लें और particularly in strict nature reserves में अगर human intervention नहीं होगी तो obviously pollution नहीं होगी, तब ये nature reserves protect हो सकते हैं या conserve हो सकते हैं. New and emerging diseases. In an increasingly modified ecology, it may be increasingly difficult to maintain an area through non-intervention, because humans ने habitat को destroy कर रहे हैं wildlife के हवाले से सिर्फ और सिर्फ growing population की वजह से. So इसीलिए human intervention को at least करना, बहुत कम करना, it is not possible today. One of the wildlife protected category declared by IUCN is called as 1B, and it is actually the wilderness area. By definition, this is an area that is usually large, unmodified or slightly modified, retaining original characters and influence without permanent or significant human habituation. So basically ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर humans की intervention नहीं है, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में, अपनी ओरिजिनल हालत में एग्जिस्ट करते हैं. अगर वहाँ पे हैबिटेट का चेंज है तो वो बिल्कुल इतना थोड़ा सा हो कि वाइल्ड एनिमल्स की डिस्टर्बेंस ना हो. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइल्डरनेस एरिया मस्ट बी, इट इज़ टू प्रोटेक्ट द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी ऑफ नेचुरल एरिया दैट आर अनडिस्टर्ब्ड बाय सिग्निफिकेंट ह्यूमन एक्टिविटी. सो अगेन देयर इज ऑलवेज a lesson that human intervention must not be in the protected areas. Other objectives include to enable indigenous communities to maintain their traditional wilderness based style. वो जिस natural format में वहाँ exist कर रहे हैं animals या organisms, उनको undisturbed उसी तरह रहने दिया जाए, उनकी habitat की destruction ना perform की जाए. To protect the relevant cultural and spiritual values and non-material benefits to indigenous or non-indigenous population. अगर वहाँ से कोई spiritual चीज़ें attach हैं, अगर वहाँ कोई again temple exist कर रहा है
तो वहाँ के लोगों को भी उसका फ़ायदा होना चाहिए और नॉन इंडिजिनस लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए, मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई स्पिरिचुअल या कल्चरल अटैचमेंट्स वहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं तो वहाँ पर कम से कम लोगों को अलाउ किया जाए टू विजिट द थिंग्स। इस वाइल्डरनेस एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लैंडस्केप्स की डेवलपमेंट में या सीस्केप्स की डेवलपमेंट में। दे प्रोटेक्टिंग कंपैटिबल इकोसिस्टम सर्विसेज, प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ विजिटर्स टू एक्सपीरियंस वाइल्डरनेस। जितने लोग ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ वहाँ जाएं कम होंगे, डेफिनेटली वहाँ पर वो एरिया अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहेगा। इसके अलावा कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं इस वाइल्डरनेस एरिया के, दैट इट शुड बी फ्री ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए तो ज़रूरी हैं, मगर इनकी वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो किसी भी तरह इन दो मेजर कंपोनेंट्स से अगर हम अपने प्रोटेक्टेड एरियाज को फ्री करें तो ऑब्वियसली वो काफ़ी हद तक और काफ़ी देर तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। बी फ्री ऑफ इनअप्रोप्रिएट और एक्सेसिव ह्यूमन यूज और प्रेजेंस। ह्यूमन की वहाँ पर हैबिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ह्यूमंस के लिए वहाँ घर नहीं होने चाहिए, ताकि वाइल्ड लाइफ अपनी रूटीन एक्टिविटीज सेफ एंड साउंड परफॉर्म कर सके। कंटेनिंग अ लार्ज परसेंटेज of original extent of the ecosystem. Again, undisturbed ecosystem is a very important and key factor for the wilderness area. अगर disturbance है, अगर थोड़े से changes हैं, they are acceptable, but modern changes, more changes, they are not acceptable. Issues for consideration: some wilderness area including livestock grazing. This is very 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 important issue because अगर वहाँ पर human intervention है, अगर वहाँ लोग रह रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने भेड़ बकरियां रखी होती हैं, सो वो उनको घास खिलाने के लिए उन्होंने चरागाह बनाई होती हैं। सो ये जो वाइल्डरनेस एरियाज होते हैं ये ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो इनकी ओरिजिनल स्टेट को डिस्टर्ब कर सकता है और इनके हैबिटेट को मॉडिफाई कर सकता है। सो वो प्रोटेक्टेड एरिया डेफिनेटली प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। सो जो डिस्टिंक्शन है ये हमें बनानी चाहिए दैट एनिमल्स की ओवर ग्रेजिंग करवानी है या नहीं करवानी। Distinction may need to be made between intensive and non-intensive grazing. However, this will pose challenges if people want to increase stocking density. So, nomad जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स है कि वो इसको किस तरह इस प्रॉब्लम को कोप अप करेंगे। For the protection of wildlife, there needs to be a protected area. और IUCN ने प्रोटेक्टेड एरियाज को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनमें से वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बाय डेफिनेशंस दीज आर द लार्ज नेचुरल और नियर नेचुरल एरियाज set aside to protect large scale ecological processes which also provide a foundation for environmentally scientific, educational, recreational and visitor opportunities. नेशनल पार्क्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पर एक बड़ा एरिया है विद लार्ज बाउंड्री, जहाँ पर एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा जगह मिलती है, उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिलती हैं और वहाँ पर विजिटर्स को अलाउ किया जाता है ताकि वो उनको आके देखें और एक एस्थेटिक सेंस क्रिएट होती है। दे मे सर्व एज सर्टन एजुकेशनल पर्पसेस, सर्टन साइंटिफिक पर्पसेस, तो उन एरियाज को नेशनल पार्क्स कहा जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव is to protect natural biodiversity along with its underlying ecological structure. Again, it is not always that wild animal is protected. It is always said that protection is made not to the wild animal but its habitat as well. So this is the major and main goal or objective of IUCN category, जिसमें ये कहा जाता है कि नेचुरल पार्क्स में एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अदर ऑब्जेक्टिव्स: टू मैनेज द एरिया इन ऑर्डर टू परपिचुएट इन एज नेचुरल स्टेट एज पॉसिबल। किसी भी तरह ये मैनेज करें कि वो हैबिटेट अपनी ओरिजिनल स्टेट में बाकी रहे, वहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड चीज़ें रहें। ह्यूमन क्योंकि अलाउ किए जा रहे हैं, क्योंकि विजिटर्स वहाँ पे अलाउ किए जाते हैं,
to see the scenery and to have an aesthetic senses. वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे नेशनल पार्क्स का विजिट करते हैं, मगर ह्यूमंस को ये पहले से एजुकेट करना चाहिए कि वहाँ पर जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं एनिमल्स की उनको डिस्टर्ब ना किया जाए. टू मेंटेन वायबल and ecologically functional population. Again, this is directly related with the human intervention. We must not intervene into the wildlife habitat. To contribute to local economies through tourism. Ecotourism is very important aspect of wildlife. जब आप नेशनल पार्क्स में वेरियस तरह के एनिमल्स को रख रहे हैं तो ऑब्वियसली जब लोग उनको देखने आएंगे एक रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है. टू मैनेज विजिटर्स यूज़ फॉर इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल पर्पसेस, कि उनको पहले से ये गाइड कर दिया जाए कि दिस इज़ जस्ट फॉर द रिक्रिएशन, यू डू नॉट नीड टू डिस्टर्ब द एनिमल्स, सो दैट कि वो अपनी एक्टिविटीज़ में रहें और अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को आसानी से परफॉर्म कर सकें. द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द नेशनल पार्क्स आर: the area should contain representative examples of major natural regions and biological and environmental features or scenery. Definitely, अगर आप किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म के लिए वो नेशनल पार्क डेवलप हुआ है उस ऑर्गेनिज्म का होना वहाँ ज़रूरी है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि उन नेशनल पार्क्स में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलें ताकि एक सेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी कंप्लीट हो सके. इट शुड बी ऑफ सफिशिएंट साइज टू मेंटेन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस. इट शुड नॉट बी ऑफ अ स्मॉलर साइज, इट शुड बी ऑफ अ लार्जर साइज जो एनिमल की रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी हो. अगर हम एनिमल्स को कन्फाइन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल्स को कन्फाइन कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं होंगी. उनको कम से कम इतना साइज प्रोवाइड किया जाए, उनको इतना एरिया प्रोवाइड किया जाए कि वो बाआसानी उसको अपना होम समझें, उसको अपनी हैबिटेट कंसिडर करें. द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी शुड बी अ ग्रेट डिग्री इन नेचुरल स्टेट. इट मस्ट बी इन अ नेचुरल स्टेट. डिस्टर्बेंस कम से कम होनी चाहिए. रोल इन लैंडस्केप और सीस्केप, प्रोटेक्टिंग लार्जर स्केल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, बिकॉज ये बड़े एरिया होते हैं तो इस हवाले से एक बिग स्केल के ऊपर, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. प्रोटेक्टिंग कंपैटिबल इकोसिस्टम सर्विसेज, प्रोटेक्टिंग पर्टिकुलर स्पीसीज एंड कम्युनिटीज दैट रिक्वायर रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट, बिकॉज लाइक इफ वी कंसिडर जू इज़ अ स्मॉल प्लेस, वहाँ पर छोटे इंक्लोजर्स होते हैं, एनिमल्स को कन्फाइन करके रखा जाता है, जबकि नेशनल पार्क्स ऐसे एरियाज होने चाहिए जो बहुत बड़े एरियाज प्रोवाइड करते हैं और अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं ताकि एनिमल्स अपने आप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें. टू इन्फॉर्म एंड एग्जीक्यूट विजिटर्स अबाउट द नीड फॉर एंड पोटेंशियल ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, उनको ये बताया जाए कि किस तरह एनिमल्स को कंजर्व किया जाए ताकि वो इस मैसेज को आगे स्प्रेड कर सकें. Issues for the consideration: commercialization of land and water in category 2 is creating challenges in many parts of the world. Industrialization, urbanization, commercialization, क्योंकि things बहुत कम हो जाती हैं, चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कैटेगरी 2 या नेशनल पार्क्स को मेंटेन करने में आ सकता है. Protected area category 3. This is actually a protected area for the natural monuments or the features. According to the IUCN definition, this is the protected area which set aside to protect a specific natural monument. So this is actually for the protection of a cultural heritage. They are generally quite small protected areas and often have high visits. The visitors actually they visit the place and in a sense revenue has been generated. The primary objective of category 3 is to protect specific outstanding natural feature, their associated biodiversity as well as the habitats. Some other objectives that are included in category 3 is to provide biodiversity protection in landscapes or seascapes that have otherwise gone radical changes. That means if human intervene in that particular
protected area, obviously the monuments may not be at their proper places. The monuments may not have their proper or cultural heritage as well. Another very important objective is to conserve traditional, spiritual and cultural values. If some spiritual and cultural values attached with the monument, obviously it is our moral duty to protect that monument. Distinguishing feature: the category 3 protected areas are usually relatively small sites that focus on one or more prominent natural features and associated ecology. If the ecology is there, obviously there may be certain organisms as well. So we have to protect the area as well as the related ecology there. Why we are going to protect these monuments? The major reason is that they are natural geological and geomorphological features like waterfalls, cliffs and caves. There may be certain culturally influenced natural features. There may be cave dwellings, natural cultural sites, forms of sacred natural sites. There may be mountains, there may be sacred groves of the importance to one of or more faith groups. Cultural sites with associated ecology, where protection of the cultural site also protects significant and important biodiversity, such as archaeological or historical sites that are inseparably linked to a natural area. The important role that the category 3 plays in landscape or seascape is that it provides an opportunity for environmental, cultural and educational purposes. Category 4 is declared as the Habitat, Species and Management Area by IUCN. So इसमें हम species को, किसी particular species को जो endangered हो या वो threatened हो, उसको protect करेंगे, और अगर कोई habitat destruction की तरफ जा रही है उसको protect किया जाएगा. So by definition, according to the IUCN, these are the protected areas aiming to protect particular species or its habitat, and management reflects this priority. The primary objectives of this category is to maintain, to conserve and restore species and habitat. Again, the primary objective is the restoration of the number of that particular species. That if the count of the particular species is going down, we have to manage, we have to conserve, we have to give certain measures. हमें इस तरह के चीज़ों को वहाँ पे इनकलकेट करना पड़ेगा ताकि वो स्पीशीज़ अपने नंबर को रिस्टोर कर सके, और वहाँ पे प्रॉपर ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड की जाएं ताकि उसका नंबर इस हद तक बढ़ सके कि अब वो थ्रेटेंड लेवल से एटलीस्ट बाहर आ सके. अदर ऑब्जेक्टिव्स इस कैटेगरी में जो शामिल हैं, दे आर टू प्रोटेक्ट द वेजिटेशन पैटर्न, बिकॉज व्हेन वी आर डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ऑब्वियसली स्पीशीज का सर्वाइवल वहाँ पर मुश्किल होता है. सो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए वी आर प्रोहिबिटेड एक्चुअली इन दैट पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया टू नॉट cut the vegetation patterns or not to destroy the vegetation pattern. Again, to protect fragmentation of habitat as components of landscape or seascape. So this is basically a scale level strategy. To develop public education and appreciation of the species or habitat. This is very important, that for a particular species which is going to be protected there or conserved there, there must be lectures based seminars जो वहाँ के लोकल पीपल को देने चाहिए, वहाँ के लोकल लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए इस बारे में कि इस स्पीशीज़ की डिस्टर्बेंस हो रही है, इस स्पीशीज़ का नंबर डाउन हो रहा है. वी हैव टू प्रोटेक्ट बिकॉज द वाइल्ड लाइफ इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स. बट अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसी तरह की रहेंगी तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स ऑब्वियसली नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो सकता है. द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स for category 4 are protection of a particular species, protection of the habitat, active management to maintain the target species, and active management of culturally
defined ecosystem. The category 4 is also playing an important role in landscapes or seascapes, and that role is to protect critically endangered population of the species, to protect rare or threatened species, as well as habitat, and to maintain the species by maintaining its habitat that has otherwise been destroyed or distorted by the human activities. Category 5, declared by IUCN, is protected landscape and seascapes. According to the IUCN definition, this is a protected area where interaction of people and nature over time has produced an area of scenically very beautiful, an area of distinct character with significant ecological, cultural, as well as biological values. This is the area where safeguarding the integrity of this interaction, the interaction between man as well as nature, is vital to protect and sustain the area and its associated nature conservation as well as other values. All the values which are associated with the area has to be conserved. The primary objectives of this category 5 is to protect and sustain important landscape or seascape and associated nature conservation. The other objectives, it includes the maintenance of a balanced interaction of nature as well as humans and culture through protection of landscape or seascapes. So we have to protect the landscape if they are scenically important. If they are too old and they have certain cultural, spiritual as well as educational value, then as a human it's a moral duty to protect these landscapes or seascapes so that these can be passed from one generation to another generation. अगर हम ये activities perform नहीं करेंगे तो obviously जो आने वाली generations हैं, they do not see the historic important landscapes or seascapes. This category 5 is also to provide opportunity for enjoyment. Obviously हम इन चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं, हम इन चीज़ों से काफ़ी aesthetic और recreational values हासिल कर रहे हैं. So if these things would not be available for future, तो हम इन चीज़ों को enjoy नहीं कर सकेंगे. To provide natural products and environmental services. The things which we obtain from these landscapes or seascapes, they are actually again a source of inspiration. Like अगर मैं पाकिस्तान में with reference to कलर कहार बात करें तो there is a salt range. This is a product of a landscape or a seascape. वहाँ से जो salt हमें extract हो रहा है, this is the product of this landscape. तो हम उसको देखकर उसको व्यू करके बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वैल्यू और रिक्रिएशनल खुशी वहाँ से हासिल कर रहे हैं. The distinguishing feature of category 5 is landscape or coastal and islandscape of high or distinct scenic quality and with associated habitats. Another very important feature is this provides an opportunity for the tourism, recreation, which is consistent with the lifestyle and economic activities as well. The role which category 5 is playing in the landscape is that this category is actually a link between human as well as the environment. If we as human protect these landscapes, obviously these landscapes will give us their products, their aesthetic senses, creates our aesthetic senses and recreational aspects as well. Tourism promotion हो रही है इस हवाले से अगर ये landscapes protected रहेंगे तो. इसके अलावा it provides a framework when conservation objectives need to met over a large area. Category 6, declared by IUCN as it is the protected area with sustainable use of natural resources. According to the IUCN, the proper definition is
These are the protected areas that conserve ecosystem and habitat together with associated cultural values and traditional natural resource management system. So this is the area actually where there may be certain natural resources. So we have to conserve them. They are generally large with most of the area in the natural condition. ये कम से कम इतने ज़्यादा होने चाहिए कि वहाँ अपनी more than 90% जो एरिया ये कवर कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टेड एरियाज, वो नेचुरल स्टेट में हो. बिकॉज कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन है और उस ह्यूमन इंटरवेंशन को चाहते हुए या ना चाहते हुए हम उसको कम नहीं कर सकते. तो इस हवाले से IUCN के अकॉर्डिंगली मोर देन 90% एरिया लाजमी तौर पर अपनी नेचुरल स्टेट में होना चाहिए. These are the area where a proportion is under sustainable natural resource management. These are the area where low-level non-industrial use of natural resources compatible with the natural conservation is seen as one of the main aim of the area. The primary objective of category 6 is to protect natural ecosystem, use natural resources sustainably when conservation and sustainable use can be mutually beneficial. The other objectives includes to promote sustainable use of natural resources, to promote social and economic benefits to the local communities as well, to facilitate scientific research and educational purposes, and as well as tourism at very low level, to facilitate recreation and appreciate small scale tourism. The distinguishing feature of this area is not to designate to accommodate large scale industrial harvest. So commercialization is not the purpose. Like if these protected area will give certain things, will certain products, we cannot commercialize the things. उससे जो प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे हैं वो उस एरिया के जो लोकल लोग हैं उन तक सिर्फ उसके बेनिफिट्स चले जाएं. बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन वो एरिया प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा. अचीव नेचर कंजर्वेशन. Category 6 protected areas aim to conserve ecosystem as well as habitat. This category is also making a very significant role in the landscapes or seascapes as they are particularly adapted to the application of landscape approaches. It is particularly appropriate to be conserve the natural resources as well as the particular habitat, where there are few or no area without the use or occupation. यही अभी हमने डिस्कस किया that there is no place which is free of human intervention or human occupation. So इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें उन सीनिकली इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को, सीनिकली इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ को जिनके साथ स्पिरिचुअल या कल्चरल वैल्यूज़ अटैच होती हैं, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है so that के these things can be transferred from generation to generation. That's why these protected areas has to be conserved.